public at large is involved. Yes, yes. Not in individual cases. No, obviously 184(3 की power जो है वो invoke तब होती है when there is public interest, there is a fundamental right involved, and the issue is of general public importance. The object has also been to ensure that state institutions perform their functions. Then what about writ of certiorari? Because in Imran Khattak case, Lord. High Court powers have been more curtailed. Or then? More than curtailed. That High Court cannot go beyond the pleadings. Yes, now after the 26th Amendment. Overreaching. So Supreme Court can do everything, High Court cannot. 187, obviously these judgments are saying that with 187 and 184(3 available to the Supreme Court, its powers are much greater. About 5 writs powers to the High Court. Lord? 5 writ powers to the High Court. But the writ powers are very vast also. But all that this judgment and others are saying is that the Supreme Court is even wider in the exercise. Under 199, the Constitution has determined what power the High Court can exercise. Yes, sir. Whereas in 187, complete justice. there is no limit. To enforce fundamental rights, there is no limit. Lacuna, gaps can be filled up. यहाँ पे गैप यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल हुए गैप्स इन लॉ. Yes, sir. Yes, sir. So gap in law का पैदा हो जाते हैं. जब एक डिसफंक्शन हो जाए, एक मामला जो एक तरीके से चलना चाहिए था, उस तरीके से नहीं चलता, अब उसको वापस लाना है. अब गैप आ गया ना. There is no law of chaos anywhere in the world. कि अगर chaos हो जाए तो कौन सा law लगेगा? Then the court has to step in and undo the chaos. So the court has to say, and I'll come to that, you've done that again and again, my lords. When the constitutional scheme is violated, there is a deviation, there is a breakdown, there is no law of retrieval, there is no law of chaos, as I said. You have to then provide a mechanism to bring the system back to the constitutional path. And that system you provide in exercise of your inherent plenary powers. There is no letter that you of the law that you can point to say कि अगर ये dysfunction हो जाए तो क्या होगा, अगर 3rd November की emergency गलत लग जाए गैर आईनी तो क्या करना है हमने. You have to do what needs to be done. There is no law which will dictate what you need to do. कहने का मकसद है कि जब constitutional violation हो, बेशक law का वजूद हो या ना हो, आपने वापस लाना है मामलात को to the constitutional path. वापस लाने के लिए आप हर वो order करेंगे which is necessary. The High Court cannot. So ठीक है, I personally feel, and particularly in view of my Lord Justice Hashim Kakar's judgment in the Balochistan High Court, कि High Court की powers भी बहुत vast हैं. लेकिन आप देखें ना, High Court की power महदूद नहीं है. issue नहीं है यहाँ पे. महदूद नहीं है. Otherwise देखिए 199 में क्या 1C in particular. आप देखें 1 में ये कहते हैं कि any person connected with the affairs of the federation or fails to perform or perform his duty in excess of authority. बहुत vast meaning है. और सर C में authority है, एक authority अगर वो अपना काम नहीं करेगी, आप ठीक फरमा रहे हैं. High Court can step in. और सर 1C ने तो उसको और वसत दे दी. 1C ने कहा any person. A और B में तो है person performing functions in connection with the affairs of the federation. I personally in favor of expanding the power, not curtailing it. So मैं अभी आऊँगा to the Balochistan High Court judgment. 1C की basis पे तो बलोचिस्तान हाई कोर्ट एंड बिफोर दैट 2009 सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की पावर्स को बहुत वसत दी है. बट व्हाट दिस जजमेंट पावर वैसी बहुत वसी है. देखिए आप उसको मिला के क्यों पढ़ रहे हैं. 199 को डोंट रीड विद आर्टिकल 187. ठीक है. 199 के पावर तो इतने हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है. कुछ सूरतों में हुई है ये सब सूरतों में क्यों को वारंटो है, जी हैबियस कॉर्पस है. आपके पास तो ऑर्डर आता है उनका चैलेंज होने, मगर उनके अपने जो ओरिजिनल पावर आर्टिकल 199 में है. विद ड्यू रिस्पेक्ट, इन माय ओन व्यू दिस इज मोर देन द ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सर ये भी जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट में. तो फिर 184(3) में यू नीड फंडामेंटल राइट्स, यू नीड public importance and fundamental right. High Court does not require the public importance and fundamental right. Even the co-warranto jurisdiction has been given to the article 199. There is no jurisdiction in the Supreme Court. बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं. Both these judgments. हम उनके ऑर्डर तो चेक करते हैं, बट उनके जो पावर हैं वो हमसे ज्यादा है. देखा जाए फर्क सिर्फ इतना किया है आपने. There are two sets of judgments. One which say that High Court's powers are wider than the Supreme Court because they don't have to look for fundamental rights, they don't have to look for public importance, they can pass an order. In few powers the person need to be aggrieved. And even co-warranto, there is no condition even that you are aggrieved person or not. So वैसे 184(3) में you can pass any order given in 199. So 199 without prejudice. जी. So 199 की सारी powers आपको to the public interest. जी 184(3) में बिल्कुल. लेकिन लिमिट वहाँ पे ये है कि पब्लिक इंटरेस्ट हो, फंडामेंटल राइट्स हो. So इस तरह देखें तो एक हवाले से हाई कोर्ट इज वाइडर, दूसरे हवाले से
so the entry point. आपको ये बात हम कह रहे थे कि यहाँ पे अपील आई थी 185 में against the judgment of the High Court passed under Article 199. But when it comes here, When the High Court fails to exercise power under 199 or in any authority fails to exercise power under हम यहाँ आ 199, जाते हैं. 185 we can Right. So we cannot 180 look into. So अब वो कह ये रहे हैं, Salim Akhtar Saab and now Dosani Travels, कि once the matter reaches the Supreme Court, all the powers of 199 are available. But in addition to that, if there is additional power needed, it becomes available because of 187 and 184.3. ये है, this is in a nutshell the crux. So vast powers under 199. This appeal is, or the appeal in the first round was a continuation of the proceedings before the Peshawar High Court. Therefore, all powers of Article 199, including under 1C, were available. But in addition to that, even when an appeal is being heard under Articles 185(2) or 3, the powers of this court under 184(3) and 187 add to whatever was available to the High Court. That is what the final conclusion of this court is. And this is what I'm reading here. Kindly see it. Para 36, page 229 of my paper book, which is the printed page 35. So no cavil here that when matters come to the Supreme Court in appeal, even under 185(2) or 185(3), this court can, if it comes to the conclusion that there is a matter of general public importance relating to the enforcement of fundamental rights, it can exercise powers under 184(3), it can invoke 184(3). So para 36 I leave, I move on then to page 233. Handwritten. This is paragraph 41. Handwritten 233. Paragraph 41. While seized of petitions under Article 199 of the Constitution, the High Courts at times are faced with prayers to pass, order, and provide relief for doing complete justice. But such powers in constitutional jurisdiction are vested in the Supreme Court under Article 187 of the Constitution. These powers are distinct both in scope and the manner of their exercise. The apex courts in most of the democratic countries enjoy such powers. The powers of this court to pass any order or give any direction for doing complete justice are similar to those which the Supreme Court of India enjoys under Article 142 of the Constitution of India, and such powers cannot be exercised by the High Courts in India in exercise of their constitutional jurisdiction. For a better understanding of the comparative constitutional law emerging from these provisions, a reference to these articles would be in order, which are as under. So they reproduce 187 after the amendment in 1976, which contains the phrase subject to clause 2 of Article 175. Then I go to para 42. In both the above quoted provisions, the paramount consideration and the constitutional intention is common, i.e. for doing complete justice. These powers being inherent are complementary to those which are specifically conferred. I again pause here. Inherent powers complementary to those specifically conferred on the court by the constitution of these two countries. These powers remain undefined so that the court can cater to any situation and could even mold the relief. For instance, if an individual acquires property... In civil court is competent to do so. I bow, my lord, I bow. बिल्कुल ठीक फरमाइए. Lots of judgments on civil court. What to say of the Supreme Court? आप बिल्कुल... Just like section 151 CPC. Right, sir. The civil court has all... Main jurisdiction in under section 9 is civil. When the constitution was not in field, even the varies of the law were challenged in the civil court. Sir, वहाँ पे ये issue फिर आ जाता है parties का, necessary party, party... No, the general jurisdiction of civil courts is provided under section 9 of the Civil Procedure Code. Absolutely, sir. When the constitution was not in field, even then the varies of the laws were challenged before the civil court, not And in then the an appeal constitution. under Order 41, it is even wider. Yes. It can grant relief to somebody who has not filed an appeal under Order 41. Power of the CPC. appellate courts. Power of the appellate court is to transpose, is to grant relief. Even any person who is not party to the Yes, sir. can file appeal. So this is absolutely a completely established part of our jurisprudence that the courts are there to grant relief to whoever is entitled to relief. Now, while in a civil court there may be this issue, when 184(3) comes into play,
and the relief is to be granted to the public at large, then there is no question of who is a party, who is a petitioner, who is a respondent. Everybody in 184(3 ultimately is an informant. मैं भी उस केस लॉ पे भी आ रहा हूँ. देखिए जब jurisdiction असाइन की गई है 184 में और 185 में, तो what was the need of further strengthening the or giving power to the Supreme Court under 187? So through 187, your lordships have said 184(3 can be invoked even under 185. So when the court is seized of an appeal under articles either 185(2 or 185, 187 की जरूरत क्यों महसूस हुई, ये बताइए, जब ऑलरेडी दो पावर्स हैं हमारे पास. बिल्कुल ठीक है सर, ये तो आपने सिर्फ वजाहत कर दी कि ये पावर 184(3 की जो है टू डू कंप्लीट जस्टिस, मुकम्मल इंसाफ बुनियादी हुकूक के लिए, वो आप अपील सुनते हुए भी कर सकते हैं. Now, Mr. Salman Akram, this question arises from this discussion, as Justice Mandokhar has pointed out, that there was an enlargement of power under Article 187 of the Constitution, giving extraordinary powers and more power to the Supreme Court. But under the principle of trichotomy of power, what do you think are the limitations of the Supreme Court while exercising the powers under Article 187? Is it required to follow particular procedure or giving notice to the parties that from here onward we have deemed it appropriate that this is an area in which we would like to exercise powers under Article 187? So that becomes apparent and it is known to all. Your lordships wear the law on your sleeves. हम भी नोट बना के आते हैं कि this is there. Each time we stand up before your lordships to argue a case, we know that your lordships are vested with 187 and 184, and when the argument is made, everybody is there. Nobody is saying, PTI is not saying कि जी हम पार्टी नहीं थे, आपने हमें क्यों relief दे दी. Who is prejudiced by this? So every person who had an interest in this case, in this matter, was there, and the people of Pakistan were also being in effect represented, I would submit, through the informants, and I'll come to that in a moment. But the people of Pakistan ultimately depend on this court to do complete justice and to enforce fundamental rights, whether somebody argues a matter or not, whether somebody makes a particular point or not. It is this court which has to decide and enforce those rights. What my learned friend asked, that there must procedure नहीं है सर. there must be some limit. Yes, ऐसे तो नहीं हो सकता कि वो तो उन्होंने खुद ही कह दिया ना. कल को हम कह दें कि जनाब नहीं प्राइम मिनिस्टर खत्म है. नहीं सर, वो तो खुद उन्होंने कह दिया ना, ट्राइकॉटमी ऑफ पावर्स को आपने सामने रखना है, उसको आपने नहीं छेड़ना. आपने अगर कोई एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ द लॉ है जो उस पॉइंट को डायरेक्टली कवर करती है तो उससे हट के इसी जजमेंट में लिखा हुआ है, आप जरा पैराग्राफ 43 पढ़ लीजिए. जी मैं आ रहा था. जो माय ब्रदर्स आर आस्किंग. जी मैं सर ये 42 पूरा पढ़ लूं. पूरा ये अच्छा है. 3 लाइनें में इनका पहले सवाल का जवाब दे दीजिए. 43 पे आ जाता हूं. The very fact that this power is conferred on the apex court alone has to be used sparingly and with an element of judicial restraint so as not to contravene any other constitutional provision or statute. So ये उन्होंने कहा कि एक हमारी ये लिमिट ये है. आपसे पूछ रही है कि उसकी कोई लिमिट है या दिस इज अनलिमिटेड पावर्स, अनब्रिडल्ड पावर्स वेस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट टू पास एनी ऑर्डर इन एनी केस. ऑनर द स्ट्रक्चर ऑफ द तो कॉन्स्टिट्यूशन. कहते हैं कि इसको स्पेरिंगली यूज करो, हर केस में ना यूज करो. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर. और इसमें जो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर्स है उसको मलहूज़े खातिर रखा जाएगा. ये क्या काम मुकन्नना का है, क्या इंतजामिया का है, क्या अदलिया का है, वो जुडिशियल रेस्ट्रेंट का भी मुजाहरा करने के लिए कहा है. वो भी करना पड़ेगा. वो सब बातें ठीक है सर, लेकिन इट डज नॉट डिल्यूट द so as to not contravene a specific the other constitutional provisions. So this is it. So कह वो ये रहे हैं कि this is आ जाए इस केस में जो जजमेंट आई है, अब आप इसको 8 मेंबर जजमेंट ना कहें, इसको 13 मेंबर जजमेंट कहें. जी 13 मेंबर्स. ये जजमेंट जो आई इसमें किसी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन या किसी लॉ को डिस्टर्ब किया है, उसके खिलाफ नहीं किया सर. मैं भी इनका तो एतराज यही है कि किसी चीज को नहीं डिस्टर्ब किया सर. एक मिसकंसेप्शन थी कि आर्टिकल 51 में 3 दिन का वक्त है टू ज्वाइन अ पॉलिटिकल पार्टी और इस जजमेंट ने शायद 15 दिन दे दिए टू ज्वाइन अ पार्टी. यकीनन ऐसा नहीं हुआ. ऐसा नहीं हुआ. इस जजमेंट ने ये नहीं कहा कि आप 15 दिन में कोई पार्टी ज्वाइन करें. इसने सिर्फ इतना कहा है कि 15 दिन में आप बयान करें कि 8 फरवरी को आप किस पार्टी के उम्मीदवार थे. So there's a world of difference between saying कि 15 दिन में आप ज्वाइन कर लें जबकि आइन कहता है आपके 3 दिन में ज्वाइन करना है. ये नहीं कहा उन्होंने.
انہوں نے کہا ہے کہ آپ ایک ایفیڈیوٹ دیں گے, اس ایفیڈیوٹ کو اگر آپ کی وہ پارٹی قبول کرتی ہے تو یہی تصور ہوگا کہ 8 فروری کو آپ اس پارٹی کے رکن تھے اور اس پارٹی کے امیدوار تھے جس کے حوالے سے آپ نے ایفیڈیوٹ دیا ہے. So جو 3 دن کی آرٹیکل 51 میں لمٹ ہے اس کو بالکل نہیں چھیڑا گیا. یہ اختیار تو ان کو آئین نے آلریڈی دے دیا تھا 3 دن کے اندر اندر, جو انہوں نے ایکسرسائز کر اس کو تو چھیڑا ہی نہیں انہوں نے. اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں انہوں نے ایکسرسائز اس میں آتا ہوں, اس کو بھی ڈیل کیا ہے نا. انہوں نے ڈیل اس کو ایسے کیا ہے کہ وہ جو 3 دن میں جوائن کیا ایس آئی سی کو, انہوں نے کہا ہے کہ وہ نان ایکٹ تھا, وائڈ تھا, وہ ایس آئی سی کو جوائن کیا ہی نہیں جا سکتا تھا. پیرا 96 کل ہم نے پڑھا, اس کی ریزننگ ججمنٹ میں پیچھے موجود. سو دیو ڈیلٹ ود دیٹ کوسچن. ایسا نہیں ہے کہ دیو ناٹ ڈیلٹ ود دیٹ کوسچن. دے آر سیئنگ کہ جو 3 دن میں انہوں نے ایس آئی سی جوائن کی یہ اس جبر کے تحت ہوئی, اور جو تمام واقعات ہو گئے تھے کہ ان کو پی ٹی آئی مانا ہی نہیں گیا تھا جب ان کو الیکشن کمیشن نے انڈیپینڈنٹ قرار دے دیا, غلط ناحق انڈیپینڈنٹ قرار دیا, تو پھر ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ ان 3 دنوں میں وہ کچھ کرتے بیسڈ آن دی ڈیکلیریشن بائی دی الیکشن کمیشن. جورسڈکشن پر کیونکہ فیصل کا ٹوٹل آرگومنٹس یہ تھا کہ انڈر آرٹیکل 187 دی جورسڈکشن ہیز بین ایکسرسائزڈ بائی دس بینچ. جی اب ریڈ ود 1 میں یہ اس کو ایڈ کر آپ کا یہ کہنا کہ 184.3 This part is subsumed under 187. ظاہر ہے 184.3 کو انووک کیے بغیر نہیں ہو سکتی. سر میں کیوں نہ انووک کریں سر, جب یہ آپ نے کہہ دیا آپ نہیں سر ہو سکتا ہے. آپ دیکھیے یہ کہتے ہیں 184.3 کو انووک کیے بغیر یہ میں نے یہ نہیں کہا, میں نے کہا 184.3 is part of the powers available to you and one way of reading this judgment, and that is how I read it, that this court has exercised all of its powers. This court has said 2 things. This court